Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Anna and I hope you guys are doing fine. So I'm vlogging my day today and right now it's 2:17. मैं एक्चुअली आज बहुत लेट उठी हूँ। उसके बाद मुझे शूट करना था और मैं शूट नहीं कर पा रही बिकॉज मुझे अपना एक रेड दुपट्टा नहीं मिल रहा है एंड आई वांटेड टू डू अ ट्रेडिशनल शूट। बेसिकली आई वांटेड टू डू अ रील एंड वो नहीं मिल रहा है तो आई कुडंट डू द शूट। तो अभी मैं मम्मा का वेट कर रही हूँ। सो व्हेन शी विल कम एंड देन आई शूट। हियर इज माय रिंग लाइट, दिस आर माय मेकअप। अभी बहुत सारा सामान ऊपर लाना है बट मैं लाई नहीं बिकॉज हमें शूट अभी नहीं करना था। टिफी, हाय बेबी। सो आज धूप इतनी अच्छी निकली है सो आई वॉन्टेड टू मल्टीपल शूट्स टुडे। सो मुझे आज फ़ोटोज़ भी क्लिक करानी थी, मुझे आज रील भी शूट करना था और इस वजह से मैं अभी मेकअप भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर मैंने अभी सॉरी सम स्टोर टिफी से हाई टू द व्लॉग। टिफी introduce you to my other dog. His name is Happy and we are going and his name is Happy. Happy. Tiffany. Guys, so my dog doesn't eat chicken. So yeah, मतलब टिफी तो खाती है बट हैप्पी डजंट लाइक ईटिंग चिकन। उसको पसंद है मतलब खाने में बहुत काम करता है। एंड आई गेस जो हैप्पी की लाइक पॉम और स्पेट्स ये सारे एक नाटक पास होते भी है। सो ही डजंट ईट चिकन। पहले 15 मिनट चिकन को सूंघेगा, उसके बाद उसको थोड़ा सा टेस्ट करेगा, उसके बाद उसको अच्छा लगेगा तभी खाएगा। ऐसे ही बोलती वो खाता भी तो वो चिकन खाता है। अदर नॉट सिंस ही डजंट ईट इट और वो खाना भी नहीं खाता है मतलब। So let's try. Happy look. Wait. See. हैप्पी खा लो, अच्छा होता है बच्चा, खा लो प्लीज़। हैप्पी नो ईट इट। देख रहे हो इतना नाटक करता है ये। एंड हियर इज माय टिफी। So right now it's 3:14 and now I have to start with my makeup and all so I can shoot. So yeah, let's do it. So I'm done with my shoot and it's right now 5:53 और मैंने स्टार्ट किया था 3 o'clock पे। एंड या इट टुक सो लॉन्ग क्योंकि हमें आधे धूप के शॉट्स चाहिए थे, फिर हमें आधे ऐसे ही शॉट्स चाहिए। एक्चुअली हमें धूप चाहिए थी बट धूप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रही तो हमें ऐसे ही शूट करना पड़ा। तो नाउ आई विल गो एंड आई रिमूव माई मेकअप एंड देन आई ईट समथिंग बिकॉज आई एम रियली हंग्री। Later that same evening. Decided to come to a friend's house for bonfire and Lodi celebration.